therapy of communication. So we would just like to start talking about communication, and I would request all of you to share your thoughts on it. You know, uh, talking about anything that we feel, even as a kid, is something that has to be encouraged and inculcated. There are children who are of various nature. Some of them are extroverts, some are introverts. कुछ लोग बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी एक एक चीज शेयर करते हैं, और अगर उनको कभी किसी ने डांट दिया हो या चुप कर कर बिठा दिया गया हो, तो फिर वो चीज इतना ज्यादा ओपनली शेयर नहीं कर पाते. सो हमारे को ये ध्यान रखना है दैट ऑल द चिल्ड्रन अराउंड अस, एंड इवन our own children, their children's children, everybody, all the children around us should have that confidence in themselves and the confidence in their uh, emotions, the expression of their emotions. They should be made to feel comfortable that they can come and share anything with you. When we were doing trainings under POXO, it was this was the most poignant point to be shared with the children, that wherever you go, whatever you do, whomever you meet, you have to come back and tell us what's happening. These are little things that we can start telling the children, that this is also a memory exercise. Whenever they go somewhere, they meet friends, they play around, they eat, they have fun, and they come back. So when we ask them to narrate all that they had done, this is a very good exercise for them to increase their memory power, and also to share whatever is happening with them, because at a tender age they don't know what is right and wrong. And once they start sharing, you can keep then putting them on the right track, that what works and what does not work, what behavior will work in the future as they grow up, and what behaviors do not help them to be responsible people. So, starting from that young age, as we go along, I feel, and I've always said this, that the last 10 minutes in a child's day are the most profound. In those last 10 minutes, we can actually make a human being out of that child. Whatever we feel we should inculcate in that little child, we have to start talking about all those things at night, because whatever we say is going to stay with them throughout the night. And when they get up in the morning, all of that has been stored in their software, and that software is something that is going to help them throughout their life. So the last 10 minutes are the most important. Now, as we grow up, even the little older children, there is so much they have been seeing around them. There are so many changes happening in their life, and if we keep the channels of communication open with all of them, with at every stage of their life, I think it makes a lot of difference, and it will also help them understand whatever is happening to them, and they have someone who's going to hear them out. बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे को मेंटली ये चीज सोचना, that we are not alone. When a child also, when growing up, that gives them the comfort, that gives them the confidence that they are not here all alone. We have people they can go and talk to. There are people who can help them out. And when you grow up with this, you grow up with much more confidence and much more conviction that whatever you are doing, you will be able to handle it. Because it is very difficult when you're growing up, and you feel that there is nobody to listen to you. That's when you start becoming an introvert. आप फिर अपनी बातें, अपनी feelings share नहीं करते हैं. And when you start bottling the whole thing up, then, like we have said so often, these things come out as pain, they come out as dis-ease, they come out as discomfort. It also comes out as multiple complexes. जब बच्चों को कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो लोगों को कैसा लगेगा. आई वुड लाइक टू टेक एन एग्जांपल ऑफ सोशल मीडिया these days. There are so many children on social media, and whatever they have to put up on their posts, on their pages, on their handles, uh, they try and put the best foot forward.
they try and not repeat the clothes that they have ever worn at a party. This also is a very, very heavy thought for the parents, because once they have been clicked and they've posted those pictures on the social media handles, they don't want to repeat their clothes. Now again, it is all up to us how we treat this. Like this say कि खुशियां तो जिंदगी में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है. So it is very important to make them feel what is important in life. It is not the outward beauty, it is what they have inside. जो आपकी thoughts हैं, जो आपका एक प्रॉब्लम को हैंडल करने का, अपने दिनचर्या को हैंडल करने का, अपने रूटीन को हैंडल करने का तरीका है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है. और हम क्या कर रहे हैं, इतना ज्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है, इतना ज्यादा हमारे आसपास ब्रांड्स हो गए हैं, और इतना कुछ है जिसके लिए एक इकोनॉमी जिसको बोलते हैं कि इकोनॉमी वर्क्स व्हेन पीपल बिकम बायर्स. So what are we doing? All the ads and the commercials are helping us only just to spend money on all the outward beauties. We are doing everything for our pain body, for our physical appearance. But how much of it are we doing and contributing to our inner body, for our inner conscience, for our soul? So we are not doing enough for that. So the reason why I thought of picking this topic again was because uh, I recently met a young fellow who came to talk to me, and he had multiple issues with children his own age. Uh, he knew that his parents could not afford it, but there was so much of peer pressure that he wanted the good clothes all the time, he wanted expensive phones all the time, and some of those children were even encouraging him to do the wrong stuff. And he was not talking to his parents about the friends that he was keeping. Now this became such a pressure cooker situation for him, because in his heart of hearts he knew this was not his upbringing, this is not what he should be doing. But uh, the peer pressure, which is actually the worst and the best thing that can happen to a person. Because like John Maxwell says कि आप अपने 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स के बारे में हमें बताइए, और हम आपको बता देंगे कि आप किस टाइप के इंसान है. सो वी आर नोन बाय द कंपनी वी कीप. तो अगर हमारे आसपास के लोग और हमारे आसपास के दोस्त उस लेवल के नहीं है जिस लेवल पे हम पहुंचना चाहते हैं लाइफ में, सो देर इज समथिंग रॉन्ग, देर इज अ डिस्कनेक्ट. अब ये डिस्कनेक्ट हमारे को अब समझ में आता है. लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, दिस डज नॉट फंक्शन एज वेल एज इट यूज टू एट द एज ऑफ 20. Ajkal they say that this development takes at least 10 more years. So at the age of 30, that child becomes a rational adult. जो उसको करना है, जो डिसीजन उसको लेनी है, फिर उसको इतनी ज्यादा एडवाइस की जरूरत नहीं है. बट टिल द टाइम दे आर at that stage where they do not need your advice and help to choose their friends, I feel every adult should push the child to select the friends that will bring out the best in them. अब ये सब कुछ तब पॉसिबल है जब हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, जब हम किसी भी सिचुएशन में होते हैं, हम उनके साथ शेयर करते हैं कि ये चीज गलत हो रही है, ये चीज ठीक हो रही है. आपके नेबरहुड में आप अगर एक मूवी देख कर आते हैं, तो उसकी भी आप कॉन्वर्सेशन करिए, उसमें से अच्छे पॉइंट्स उठाकर आप उनसे बात करिए. अगर आप किसी इंडिविजुअल को मिलते हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में से एग्जांपल्स ले सकते हैं. सो द होल पॉइंट हियर इज टू ओपन ऑल द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. क्योंकि जब उस बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, या जब वो बच्चा बहुत लो होता है, उसके पास ये कंफर्ट होना चाहिए और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो इमीडिएटली आपके पास आ सकता है. अब कई दफे ऐसे होता है कि हमारे आसपास जो पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट, they don't have so much time. They actually do not have so much time. So what can we do as responsible adults?
I feel that we can guide, and we can also start talking to the children in our neighborhood. We can start talking to the children in our families, our extended families, so that they know कि उनके पास एक ऐसा adult है जिसके पास वो जाकर बात कर सकते हैं. सो ये सबसे बड़ी एक मुझे लगता है सर्विस है. और ये चीज मैंने पहले भी किसी और रेफरेंस में भी कही है कि हमारे आसपास जितने लोग हैं, अगर हम उनसे कनेक्टेड रहें, हम उनसे बात करते रहें, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बड़े बच्चे हैं, चाहे वो अडल्ट हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हैं, प्लीज कीप द चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन विद ऑल ऑफ देम. आप भी शेयर करिए और उनको भी इंकरेज करिए शेयर करने के लिए. अभी हाल ही में मेरे को एक ओल्ड एज होम के लेडी मिली जो रन करती हैं एक ओल्ड एज होम. एंड शी सेड द होल पर्पस ऑफ हर लाइफ वाज दैट all the senior citizens in her area should not be sitting at home and thinking कि उनका कोई नहीं है. So she started this little place in her ground floor, and she encourages all the senior citizens of the colony to come in every day between 10 and 4. आप आइए, और हर रोज उनके लिए कोई ना कोई एक्टिविटी वो तैयार करके रखती हैं. आप आइए और उसमें शामिल होइए, जिससे कि यू स्टार्ट फीलिंग बेटर बिकॉज यू आर शेयरिंग. यू नो देर इज समबडी टू लिसन टू यू. बड़ी सिंपल बात है ये. when you know there is someone to listen to you, you feel happy. कोई आपसे पूछे कि आपका दिन कैसा था, कोई आपसे पूछे कि आपने आज क्या खाया, आप आज कहाँ जा रहे हो, आपका क्या प्लान है, अपने आप life becomes so much better, right? So I would just like to open the floor to anybody. Please give your comments, your thoughts, your plans, your advice, your anything that you would like to share. Please. Preeti ji, you want to start? You have a lovely smile. God bless you. थैंक यू मैम. मैम मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने एक बेबी के लिए एक बात कही थी कि वो मतलब आजकल का जो रूटीन हो रहा है वो फोन की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होते जा रहे हैं बच्चे इस टाइम पे. तो कहीं ना कहीं जो ये फोन वाला इशू है वो ऐसा नहीं है कि बच्चे खुद कर रहे हैं, हमारी कमी के कारण कर रहे हैं एक्चुअल में. कि जब हम बच्चों का टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं तो हम खुद भी ऐसा होता है कि ठीक है यार बच्चा परेशान करेगा, तो उस मेहनत से बचने के लिए उनको जो टाइम स्पेंड कर रहा है उससे बचने के लिए हम बोलते हैं ठीक है तू ये पकड़ मोबाइल और इसके साथ टाइम स्पेंड कर, या इसके साथ वीडियोस देखे, ये पोएम देख या फिर ये कार्टून देखते. तो इस कारण बच्चा है ना फोन की तरफ जा रहा है. उससे क्या हो रहा है कि फैमिली के साथ जो उसकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है. फिर हम पेरेंट्स के एक इशू आता है कि बच्चा हमसे शेयरिंग नहीं करता है, जैसे कि आपने कहा शेयरिंग इशू आते हैं. जब वो इन्वॉल्व हो गई, क्यों? क्योंकि हमने उसकी जो ग्रोथ की है तो वो सेम वैसी ही की है कि जैसा वो बन चुका है. अगर हम बचपन से उसे कोई प्रॉब्लम है, अगर हमारी पर्सनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल हम उससे ये बोले कि बेटा आज आप क्या कर रहे हो, चलो आज अपन पढ़ाई करते हैं, या फिर चलो आज हम गार्डनिंग करते हैं, या आज हम घूमने चलते हैं, देखो बेटा हम यहाँ घूमने गए थे, वहां पे हमारे साथ ये हुआ. जब हम उनके साथ हमारे मूवमेंट शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें ये मतलब जो कहते हैं हम इंस्पिरेशन नहीं, मतलब मोटिवेशन, सॉरी, मोटिवेशन आएगा कि ठीक है अगर मम्मा पापा हमसे ये शेयर करे तो हमें भी करना चाहिए, राइट? और सेम तो उससे एक चीज होगी कि वो जब बड़े होंगे तो उनकी लाइफ में बहुत से जब हमारी जैसे यंग जनरेशन आती है तो उनके साथ बहुत ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जब हम डरने लगते हैं कि हम शेयर करें नहीं करें, करें नहीं करें, राइट? तो ऐसे में हमारी लाइफ में एटलीस्ट एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जिससे हम शेयर करें. उससे ये मतलब सॉल्यूशन ये निकलता है कि बच्चा जब अगर अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर करता है तो जो माइंड के अंदर मल्टीपल चैनल्स जो हमारे बन रहे होते हैं या अपन थ्रेड्स कहते हैं जिनको, वो बन रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव होता है वो रिमूव भी होता है. क्यों? क्योंकि अगर अपन शेयर कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हमें बताने वाला होता है एक इंसान,
है, तो वहां से बंदा डिप्रेशन वाली जो सिचुएशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सब चीजों से वो दूर निकल जाता है। तो अगर इन सब से दूर निकलेगा तो हमारे, अभी मैं करंटली रेशो की बात करूं तो परसों के न्यूज़पेपर में एक चीज आई थी कि यंग यंग जनरेशन को सबसे ज्यादा अटैक आ रहा है इस टाइम पे, जो कि पर डे के 30% मतलब है इंडिया के अंदर, इंडिया का रेशियो है ये। तो उसका रीजन एक यही है, पेरेंटिंग, कि उसके जब बच्चा मतलब अंदर से ही वो इतना ज्यादा पजल्ड हो चुका है कि शेयर नहीं कर पाया, तो पैनिक अटैक आने लगता है। पैनिक अटैक हार्ट अटैक की फर्स्ट स्टेज होती है, जो कि एज ए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि पैनिक अटैक आने का मतलब है ये इंसान हार्ट अटैक की सिचुएशन की तरफ मूव कर गया। सेम थिंग जो वो मतलब जो एडल्ट होते हैं, तो एडल्ट का हमारा आ गया, बट जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग के साथ भी सेम चीज होती है कि जब वो घर में होते हैं, तो हम लोगों के जब हम जॉब पे जा रहे हैं या बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो हम पेरेंट्स को ये मान लेते हैं कि ठीक है, उन्होंने काफी लाइफ अपनी जी ली है और अब हम मतलब वो अपनी लाइफ को आगे कर सकते हैं बच्चों के साथ, है? तो हम बच्चों के साथ सोच लेते हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चों को उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं, सिर्फ इसलिए हम खुद मतलब ये मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो कह रही हूँ मैं, कि हम लोगों को ये लगता है कि उनकी जनरेशन में उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है या उन्होंने जो देखा है वो हमारे बच्चों को सिखाएंगे, और वो नई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्ड नहीं कर पाएंगे हमारे बच्चे, या फिर जैसे हम कहते हैं कि पुराने जमाने के ख्यालात, राइट? तो वो चीज हमारे बच्चों में ना आ जाए, एक इनसिक्योरिटी के पर्पस से हम अपने इन लॉ जो है या फिर हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या मदर फादर है उनके साथ इन्वॉल्व होने से थोड़ा सा बचाते हैं बच्चों को। उससे सेम थिंग की सेम डिप्रेशन बड़ों के साथ चल जाता है, सेम ही चीज आ रही मतलब आगे बढ़ रही है वो। तो वो लोग सोचते हैं कि नहीं हम अकेले हो गए, जबकि एक्चुअली उनको हमने खुद ने अकेला कर दिया, सेपरेट कर दिया, उनको टाइम ना दे करके किया है। सारी जो कहानी है वो एक्चुअली टाइम वेस्ट है इस टाइम पर। और ऐसे में मुझे लगता है कि अगर ठीक है हम उनको टाइम नहीं दे पाते, तो हमें बच्चों को उनके साथ करना चाहिए। हो सकता है कुछ उनकी जो उनकी जनरेशन के थॉट्स हैं वो बच्चों में आए, बट ऐसा नहीं है हर चीज नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव भी बहुत सारी चीजें शेयरिंग होती है। बच्चों को कोई गलत नहीं सिखाएगा, पहली चीज। दूसरा ये है कि जब हम ये देखते हैं कि यार बड़े हो गए, अब हम कैसे जिम्मेदारी निभाएं, या फिर कि अब हम क्या करें यार, ये तो ऐसा बोलते हैं, ये तो हमेशा गुस्सा कर रहे होते हैं, क्यों कर रहे हैं वो गुस्सा, उस क्यों का जवाब हम नहीं ढूंढ रहे होते हैं एक्चुअल में। अगर हर एक पर्सन उस क्यों को ढूंढने लग जाएगा, तो हम डेफिनेटली श्योर कि जो बचपन से मतलब ड्रॉन स्टेट है वहां से लेकर के जो एंडिंग स्टेट का जो सर्किल है वो कंप्लीटली फाइन हो सकता है पूरी तरीके से। बट सिर्फ उस क्यों को ढूंढना है कि ये इंसान अगर ऐसा ट्रीट कर रहा है या ऐसा बोल रहा है, ऐसा कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। जिस दिन उस क्यों का आंसर मिल गया सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये मेरा प्रॉमिस है। वेलकम। वेरी नाइस प्रीति जी, आई रियली अप्रिशिएट ऑल दोस थॉट्स। बहुत अच्छा, आपने 3-4 पॉइंट बहुत अच्छे बोले हैं। वेरी नाइस। थैंक यू फॉर थैंक यू। शेयरिंग। थैंक यू वेरी मच। धारनी, भावना, अनु, who would like to share? Chalo, let me start. So, this is actually a very, very important issue. And बच्चे क्यों ना, हम लोग भी सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. When we see our, friends and all having some party you may have missed or some gathering you may have missed, उसको उसकी photos देख के लगता है कि you feel left out. Huh? And you feel ke, oh my god, they had such a nice time. I recall just about 2-3 weeks back we had a college get together,
and someone said कि wow, look at the you had amazing time, वो photos इतनी अच्छी आई थी, पर actually अंदर से इतना तो great नहीं था, अच्छा था, मजे आए, friends थे, but it was not as good as what the photos were depicting. तो basically get-togethers का जो हो गया है ना, the aim is to just go there, click photo and come back. That's kind of something which is going on these days. And I think हमारे जो talk to big ears है, we can have a few or the ways and means to overcome this, because this is an issue. It's definitely it makes you feel alone, makes you definitely feel alone, not only children but even adults. You feel left out, and then you feel like putting all kinds of things on your photos and filters and this and that. And one option is to get away from social media, which many of us are doing, and many of our children are also doing. But we should use social media for the purpose for which it is made, to keep connecting with people. पर ये सब नहीं हो रहा है, उसमें तो जो काफी टॉक्सिसिटी है उसमें. तो अगर आप लोग एक ना ट्रेलर है of a British serial called I Am Ruth. So just see it on YouTube. It is quite scary. It's a BBC serial, and how this young girl, how she is so badly affected by social media. She is driven to social suicide. So this is a issue, and it has to be tackled scientifically. Um, and I think our organization, this Dr. Big Ears, is very well poised in making some kind of advice or some kind of ground rules for helping children and adults cope with social media. Because yes, security of your family is one thing, पर उसके बावजूद भी बच्चे ना मतलब उधर की तरफ चले जाते हैं. They get under so much of pressure for no rhyme or reason. तो it's something which has to be dealt with, and it's tough. बच्चे मानते नहीं है, वो उनको चाहे तो कितना ही कह दो कि भाई ये तो सब ये शो ऑफ है, ये फलाना है, ऐसा ये गलत है एंड ऑल दैट. पर वो उनका ना मतलब बायोलॉजिकली वो उधर की तरफ चलते हैं. सो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो वो अपने इंट्यूशन पे चलते चले जाते हैं कि हाँ ये हमारी फ्रेंड, शी इज वेयरिंग सो, शी और ही और व्हाटएवर. We have to do something about it. It's an important issue, very, very important issue. This communication is going overboard, and it's causing a lot of problems. नए कपड़े, नए filter, नए ये कुछ let's work on this, all of us, I feel. है ना? So interesting. You've just given me a very wonderful thought that communication from person to person and Hmm. communication on social media. Uh, Hmm. it is of course, any progress in the scientific world with all these gadgets is for our betterment. But Hmm. what we do is we need to have more discipline to it help us in improving our lives. But we are getting carried away, and misuse and indiscipline has actually taken this huge side of social media other than what it was meant to be. So I think yes, this is something which is very interesting, and we can think and develop something out of this thought. कि communication on social media is not what is important in your life. Communication from with individuals is much more important. And maybe to have a weekend as a Hmm. family, to have a detox weekend as a Hmm. family, and nobody goes to the phones and everybody just enjoys each other's company, like something like a to go through another small little weekend lockdown where you are only Hmm. just with your family and friends, and you're not Hmm. using any screen.
You are just looking at the screens of each other's eyes. And that's it. And learning so much from each other. Absolutely super point, Dharini. Thank you. Thank you for sharing. Bhavna, Anu? Bhavna ji, you were unmuting yourself, so please go ahead. Yeah, I'm a little under the weather. I'm just hearing you guys out. But yes, definitely communication. आपको मालूम है मेरे लिए communication is the most important tool that I use, and it that is the only way to sort, only rescue. Bhavna ji, take care. So yeah, Take care. Get well soon. yeah. Test कराया? नहीं कराया. चलो, never mind. You'll be fine in a couple of days. Viral भी बहुत हो रहा है सबको. Relax. You'll be okay. Don't worry. गरम गरम चीजें पियो. Over to you, Anu. So actually, Preeti, Dharini, Anjali, everybody is making such great points. What I'm getting out of this is like talk to big ears can do more. See, we are doing it online, and that is the way, like reaching out to people. But maybe there is a way that we can do in person session. And like take small steps towards it. Of course, like we can't be drastic anywhere. Like we have to have social media, to reach out and everything. From top to big ears perspective, I'm saying. Yeah, but have in person like we have done like too. But think more and more how we can, do in person sessions also. That will be the way to go. Personally, for me, I feel Saturday, Sunday, or someday uh, to make it like I make a thing that I will not switch on the laptop. So that is my personal vrat upvas from not from social media, but from the screens, and it gives me immense say relaxation. I think everybody who has practiced that kind of switching off from electronic gadgets feels relaxed, like it's kind of a meditation. Because I have experienced this, like taking our phones off in certain workshops, that you just keep your phones in certain place. And Dhaniji was, telling us about a British serial. There was a movie, like I think 5-6 years ago, where that person, the protagonist in that movie, he gets an online girlfriend. Like that whole movie was based on this premise that his girlfriend, like in the beginning for 15 minutes, you don't know whether he's actually talking to a live person or an like an electronic girlfriend. And later on you find out that, oh my god, he's working on his laptop or on in his shower, or everybody, he's just talking to that electronic gadget all the time. And it was like at that, I mean, it is like what, 6-8 years, I don't I may put know the name of the movie right now. But yes, sometimes we become so much engaged in our gadgets that becomes our world. And how to get off it is something, a detox or an upvas or breath. So for personally, we have to make that reflection or do that reflection. And of course, from top to big ears, how we can do it is through this listening service and in person session. मैं ना एक चीज और बोलना चाहती हूँ अनुराधा, अंजलि, कि ना जब हम स्क्रीन पर होते हैं ना, तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स की बायोलॉजिकली क्या है कि वी मेक एन असेसमेंट थ्रू वॉइस एंड 4 थिंग्स ना, वीडियो, ऑडियो,
kinesthetic, that is touching, tactile, movement and all. जब ये हम स्क्रीन पर होते हैं ना, तो हमारी इंट्यूशन गड़बड़ा जाती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि what exactly is happening, you know, or who is speaking, whether it's the correct voice, whether it's we are actually like Anuradha was saying, falling in we are liking or falling in love or whatever, or having admiration for a fictitious person, because let's say if I put a lot of filters and all that, no, so mera the other person's senses will perceive me differently. So we kind of think कि ये we should look like this, like actresses and all, na? So we have to be careful because our intuition stops working there. Very good point, Dharini. That was very profound. Absolutely, because we learn in different methods. And when we meet a person, it is not just about the personality or the tone of the voice, it is about the body language. And they say the spoken word is only about 5% of the communication, 95% is very subtle. It is about everything else: how you shake hands, how you sit down, and where you place yourself vis-a-vis the other person who's talking, and how you use your hands, your body language, and the way you look at them. Whether you are looking away or you're looking into the eyes, all these points actually are a very important part of communication. And yes, absolutely, we are losing that touch, and we don't even realize uh, which side we are on when we are talking to somebody over the screen. Very, very profound points today we've made, Anu. I think we've got so much of gyan from everybody, and there is so much we can create out of all of this. So this is awesome, yeah. Each one of you, thank you, thank you, thank you so much. And if there's anything you want to say as a closure. मैम मैं एक चीज कहना चाहूंगी इसमें। देखो, एक टॉपिक आया था सोशल मीडिया, देन ड्रेसेस के लिए आया था कि बेबी से मल्टीपल ड्रेसेस की डिमांड्स होती है इसमें कि हर दिन नया चाहिए उनको। देन एक आया था इलेक्ट्रिक गैजेट्स, देन एक आया बॉडी लैंग्वेज। ऐसे हमारे सामने आए 4 टॉपिक्स जस्ट अभी। सो मैं ये कहना चाहूंगी इसमें इसमें जो चारों टॉपिक है वो सबसे एक चीज से रिलेटेड है, वो है हमारे खुद से। कि अगर हम जो चीज कर रहे हैं एक्चुअल लाइफ में, वो चीज एज ए जैसे जीन्स बच्चों में ट्रांसफर होता है, वैसे ही ये सारी चीजें ट्रांसफर हो रही है हमारी आने वाले जनरेशन में। ये जो जनरेशन हमसे छोटी है, राइट, उसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है हमें कि वहां पे ये कमी है, या वो इन चीजों की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर उनको डाइवर्ट करना है या वापस से सही वे में लाना है, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। जस्ट लाइक सोशल मीडिया, कि बच्चे सोशल मीडिया की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक मेरा क्यों हो रहा है, हम खुद सोशल मीडिया यूज करते हैं और उसमें कभी 2 आवर्स दे रहे हैं पर डे के, हैं कभी 3 आवर्स दे रहे हैं। तो बच्चे देखते हैं अच्छा 3 आवर्स अगर मम्मा दे रही है या पापा दे रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। उनके लिए बिल्कुल न्यू चीज होती है, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, उनके मेंटल लेवल इतना नहीं है कि वो सही गलत समझे, बट हम समझते हैं फिर भी हम नहीं करते। देन आया टॉपिक ड्रेसेस। जब पेरेंट्स रोज नई ड्रेस पहनेंगे या एक ड्रेस को चलो 2-3 टाइम पहने और अब डिस्ट्रॉय कर दो, अब ये हमारे काम के नहीं, ये मैंने काफी बार पहन लिया, मुझे नहीं पहनना। अगर इस तरीके के थॉट्स पेरेंट्स के होंगे तो बच्चे में तो ऑब्वियसली वो आएंगे, क्योंकि बच्चा सीख कहाँ से रहा, अपने से बड़ों से, राइट। देन एक है इलेक्ट्रिक गैजेट्स। आज के टाइम पे 90% घर के जो इंस्ट्रूमेंट है वो इलेक्ट्रिक है। अगर ठीक है, एक सहूलियत के हिसाब से हम यूज करते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं हमें ना वो चीजें भी घर में रखनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रिक नहीं है। मिक्सी अपन काम में लेते हैं,
जूसर जिसे कह सकते हैं या ग्राइंडर है, ठीक है, आप उसे काम में लेते हैं, लीजिए, वो एक बहुत अच्छी चीज है अपनी जगह पर, बट उसके साथ में जिसे हम खरल बोलते हैं या फिर पहले के टाइम पे फिसलवट्टा बोलते थे, जिसमें हम चिकनी बनाते थे, स्पेशली वो आम की बनाते थे या आलू की चटनी बनाते थे पुराने जमाने के लोग, तो वो चीज भी घर में होनी चाहिए कि हम बच्चों को बता सकें कि बेटा ये चीज भी होती है, हाथ से जब करते हैं तो ये होता है। तो उनके सामने एक मतलब होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए लाइफ के अंदर कि वो जाने। मैं भी बहुत सारी चीजें मेरी मम्मा के पास देखती हूँ कि अच्छा, मम्मा बोलती बंगड़ी, मम्मा क्या होती है बंगड़ी, तो वो मुझे दिखाती है कि बेटा इसे बंगड़ी बोलते हैं या इसे कड़े बोलते हैं, इसे ये चीज बोलते हैं, बहुत सारी चीज सिखाती है। देन बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हमें खुद को सिखानी चाहिए बच्चों को कि ठीक है बेटा, हैंडशेक करना तो ऐसे करना है, या कभी चलना है तो स्ट्रेट, मतलब बॉडी को स्ट्रेट रख के चलना है, ऐसे बिल्कुल इसे नीचे नहीं रखना है, सामने देख के चलो, मतलब वो सारी चीजें हमें बचपन से बिल्ड करनी चाहिए, बच्चे में कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करनी चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है, हमें सिखानी होगी पहली चीज तो बच्चों को। दूसरी है, सिखाने से पहले हमें अपने आप को बिल्ड करना चाहिए कि अगर हम में नहीं है तो किसी में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे जो, मैं एक टॉपिक लूंगी लैंग्वेज का। फॉरेन के अंदर जो बच्चों का बर्थ होता है, तो वो बच्चे बिना सिखाए इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। उनको कोई अलग ट्यूटर नहीं रखा गया है कि वो इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। ठीक है, हमारा बच्चा फॉरेन में उसका बर्थ हुआ है तो एक ट्यूटर हायर किया कि तुम इसे इंग्लिश सिखाओ, ये हिंदी नहीं सीखना चाहिए, ये राजस्थान नहीं सीखना चाहिए, ये फ्रांस नहीं सीखना चाहिए, मतलब उन चीजों के लिए नहीं होता है, बट वो उनकी इनबिल्ट फीचर होता है कि वो सीख जाते हैं क्योंकि उनके आसपास का एनवायरमेंट होता है। सेम चीज अगर हम इंडिया की बात, मैम वॉइस नॉट हम क्लियर। हमारा टाइम खत्म होने वाला है, सो आइदर वी ऑल कम बैक। ओके, या सर सॉरी, क्योंकि लेस देन 1 मिनट। हाँ, तो फिर हम वापस आते हैं अनु। आई थिंक लेट्स जस्ट ऑल कम बैक बिकॉज दिस विल गेट डिस्कनेक्टेड। या या वापस आइए। सो मतलब इंडिया में वही चीज हो रही है कि इंडिया के बच्चे अपनी लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं पेरेंटल से। तो मैं ये कहूंगी, अगर जनरेशन को चेंज करना है तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करो, वो आगे फर्दर ग्रो कर सकती है। चेंजेस हमें लाने होंगे, कोई दूसरा